Now this is an important question. This question is tested in examination also. What are the problems in securitization? तो सिक्योरिटाइजेशन का ग्रोथ या उसके प्रोग्रेस में से क्या क्या इश्यूज है, ये हमको पूछा गया है. फ्रेंड्स, ओवर हियर अगेन से आपको ये हेड पॉइंट्स याद रखने बहुत ही जरूरी है. आपको ये हेड पॉइंट्स याद रखने बहुत ही जरूरी है. हेड पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. एक तो है स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कुछ जगह पे stamp duty is required to be paid say for these, that is the entire process. और स्टैम्प ड्यूटी कई कई स्टेट में तो 12% तक है. तो जितना टैक्स ज्यादा होगा से उतना कोई भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने में मुश्किल होगा. सो द स्टैम्प ड्यूटी इज वन ऑफ द हर्डल फॉर द ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. इनकम टैक्सेशन के, दैट इज इनकम टैक्स के लिए क्लैरिटी नहीं है. देयर इज नो क्लैरिटी दैट से हु विल बी टैक्सेबल. अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज नहीं है. ऐसा बोला जाता है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, बट स्टिल कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी उसका इंड एस नहीं है से हु विल स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर ऑफ द अकाउंटिंग. लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर, कि यही सीक्वेंस में सिक्योरिटाइजेशन होना चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. सो कंपनी टू कंपनी या तो इंटरमीडिएटरी टू इंटरमीडिएटरी ये प्रोसीजर चेंज होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनएडिक्वेट से द डेट मार्केट, ये मार्केटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं दैट से डू यू वांट टू परचेज इक्विटी शेयर ऑफ इन्फोसिस, तो आप तैयार हो जाओगे, आप बोलोगे हाँ सर मेरे को कोई एतराज नहीं है. ऑफ कोर्स प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो मैं आपको दूंगा. सो इक्विटी शेयर्स क्या है वो आपको पता है, इन्फोसिस क्या है वो आपको पता है. सपोज मैं आपको बोलूं दैट से वुड यू लाइक टू परचेज इक्विटी शेयर ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप थोड़ा हेजिटेट होंगे. आप you will ask me a few questions. However, you know that's a what is equity shares. But यहाँ पे इश्यू क्या है फ्रेंड्स, दैट्स द सिक्योरिटाइजेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है, these instruments are not very friendly investors. In a way that's the investors को इतना पता ही नहीं है that say securities क्या है. So investors are hesitant in making investment in these securities. और उसके अलावा the second point is that say it is not having say the very good secondary market. कोई भी प्राइमरी मार्केट स्ट्रॉन्ग करने के लिए इट इज वेरी दैट इज नेसेसरी, इट इज वेरी एसेंशियल दैट इट इज हैविंग द गुड सेकेंडरी मार्केट. बट ये नया टाइप का सिक्योरिटी होने की वजह से उसका सेकेंडरी मार्केट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉस. इसका मतलब ये है दैट से अगर कोई लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो उससे पैसा वसूल करने के लिए से इतने इफेक्टिव लॉज नहीं है. और इन्वेस्ट दैट इज जो भी म्यूचुअल फंड है, पेंशनर फंड्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पता ही है कि अल्टीमेटली वो लोग इन्वेस्टमेंट उसी चीज में कर रहे हैं से जो डिपेंड करता है दैट से लोन का रिकवरी कैसा होगा. ऑटोमोबाइल लोन दिया है उसका रिकवरी कैसा होगा, हाउसिंग लोन दिया उसका रिकवरी कैसा होगा, उसके ऊपर उनके इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है. तो अगर वहां पे से ये इफेक्टिव नहीं है, then in that case again it is going to create a problem. So these are the 6 like the important problems that we have in growth of securitization. And as a student आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है और उसके अंदर आपको कुछ relative statements लिखने हैं. Let us read one by one. Problems in securitization. So let us read the content. Stamp duty is one of the obstacle in India. Under Transfer of the Properties Act 1882, mortgage stamp duty, which even goes up to 12% in some states of India, and this impacted the growth of securitization. It should be noted that since pass-through certificate does not evidence any debt only, be able to receive
I'm sorry, pass-through certificate does not evidence any debt, only able to receivable, they are exempted from the stamp duty. Moreover, in India, recognizing the special nature of the securitized instrument in some state has reduced the stamp duty on them. तो कुछ जगह पे कम भी है और ये PTC is exempted. That is what they have specified, but still it is what's one of the obstacle. Taxation. In absence of any specific provision relating to the securitization instrument, in Income Tax Act, experts' opinion differ a lot. Some are of the opinion that in special purpose vehicle, as a trustee is liable to be taxed in a representative capacity, then other are of the view that instead of special purpose vehicle, investors will be taxed on their share of the income. Clarity about the whole taxation applicability on the securitization transaction is not available in current tax regime, which creates a huge tax implication or evasion of the tax, including capital gain tax. Accounting. Accounting and the reporting are of the securitized assets in books of the originator is another area of the concern. Although securitization is a state of an off-balance sheet instrument, but in true sense, receivables are removed from the originator's balance sheet. Lack of standardization, that's very true. Every originator, यानी कि बैंक हमारे एग्जाम्पल में, follows own format of the documentation and administration have lack of standardization is another obstacle in the growth of securitization. The lack of standardization reduces the ability to compare the data in a convenient manner, thus increases the workload of the parties and credit enhancers. तो जो भी उनसे एसोसिएटेड है और क्रेडिट एनहांसर्स को से उसमें दिक्कत आती है। मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Lack of existence of a well-developed debt market in India is another obstacle that hinders the growth of the secondary market of the securitized asset-backed securities. As there is no mechanized channel to execute the securitization transaction in an effective manner. Ineffective foreclosure laws. For last many years, there are efforts going on for effective foreclosures, but still foreclosure laws are not supportive to lending institution, and this makes securitized instrument, especially mortgage-backed securities, less attractive as lenders face difficulty in transfer of the property in the event of the default by the borrower. So we understand that say बेसिकली जो पैसा नहीं देगा से उनसे पैसा कैसे वसूल करने का उसका जो लॉ होना चाहिए दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, और उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम इज गोइंग टू बी अफेक्टेड विद दैट.